मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बचपन में सुना करते, तुम कितने खुशकिस्मत हो, एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है। हम उस जज्बे से बड़े हुए थे। मुझे भी 65 की जंग याद है कि हमारे वहां जमान पार्क के अंदर एक मीटिंग हुई कि जी इंडियन पैरा ट्रूपर्स आने लगे, तो हम सारे जमा हुए। मैं 13 साल का था, मैं भी अपनी बंदूक पकड़ के पहुंच गया कि मैं भी लैंड करूंगा। तो यानी जज्बा था लोगों में। उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत छोटे हो, वापस चले जाओ। तो मैं बड़ा पछताया कि मैं छोटा हूं। तो एक जज्बा था पाकिस्तान का, हमें एक कॉन्फिडेंस था 60s के अंदर जो बड़ा हो रहा था। हालांकि डिक्टेटरशिप थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि PIA की कोई अभी बात कर रहे थे, दुनिया की टॉप एयरलाइन थी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे। आपकी किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो यहाँ थी वो दुनिया में मानी जाती थी। बाहर से सारे मिडल ईस्ट से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। मेरे साथ HSN में मलेशिया की शरारतें पढ़ते थे। यानी ये वो मुल्क था जो हम अपने आप को कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिंगापुर पाकिस्तान को भी मुकाबला हो सके। तो उस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है आज इधर पहुंचते हुए, और ये पहुंचना था जिधर हम। I think cricket was always the #1 sport in Pakistan. But it became a mass sport gradually. I think it was when we played India in 77 onwards and then in 82, it just exploded in Pakistan. And then when we won the World Cup, it went to the tribal areas, to the northwest province frontier, which is now called the KP province of Pakistan. So it spread everywhere. There's no one more idealistic than me. It's never the talent in cricket I found which made a cricketer outstanding. It was how ambitious what he dreamt of. We have to dream. The bigger the dream, the bigger the man. In 1971, Imran Khan made a disastrous Test debut against England, and it appeared his international career could be over before it had begun. He then turned his attention to education at Oxford's prestigious Keble College, where he captained the university side and played the odd county match for Worcestershire. I remember Imran coming and playing for Worcestershire. As we would say in the trade, as a big filthy in-swing bowler. At little pace, 75 miles an hour. He got fit and strong and started racing in, and as quick as anything around, and nasty. You know, he could be nasty with it. In 1974, Khan picked up his first Test wicket against England at Headingley, 3 years after making his debut. But it was his shock move to Sussex in 1977 that really kick-started his career and brought him closer to London. Imagine a bowler changing his whole action. That's impossible. That's unheard of. And after 2 years, he worked on his action, proper cartwheels, sideways. So it means he was also very tough mentally and very hard-working bloke. Khan's performances with bat and ball during the 1980s elevated him to one of the world's greatest all-rounders. You know, those all-rounders, 4 of them, Richard Hadley, Kapil Dev, Imran Khan, Surya and Botham. Imran for me is their top ultimate because I knew him inside out. Imran Khan really stood out for me as a very consistent, reliable performer. He could bat anywhere in the order, certainly bat in the top 6, sometimes bat at number 4, and he could score runs at a casual pace or a blistering pace. When he played as a batsman, he could play either way. He could just hold a game together, or he could extend the game. Sometimes you get all-rounders who, especially bowling all-rounders, who think like bowlers. But he actually thought like a batsman, compiled his innings like a batsman. And then he played according to the situation of the game. As a bowler, he was a potent strike bowler. You know, wound up in delivery, wide of the crease, angled it in with a big swing. And his record is an outstanding one. I saw him bowl, and I wanted to be like him. Simple as that. Great personality, great leader,
great role model. He was a strong, confident, proud man. He's my hero. He's my idol. As a bowler, he was a potent strike bowler. I have to pick one player, one name comes straight away, the great Imran Khan. With Imran Khan's performances turning heads in the cricket world, he was fast becoming a national hero back home in his beloved Pakistan. Imran was the first truly national inspirational figure that Pakistan had. There were other great cricketers before him, there were role models, but not in the way that Imran brought the whole country together. In the early 80s, cricket in Pakistan was changing under the guidance of both Imran Khan and the gritty street fighting qualities of Javed Miandad. When we were growing up and Javed was acting as a vice captain under Imran Khan, I think it was a great help to Imran. We always praised him as well, because in the beginning Imran Khan was not a very good captain or not a very good learner. He was also a very hard worker man. They knew what was happening, they knew what to do, what sort of field setting we needed, what sort of mindset we needed as a team or as individual bowlers. So they were great help, not just to me, to every youngster around them. And we owe these two guys a lot. Pakistan as a team were known as being a team of individuals. They didn't especially get on. First step he made as a captain was actually to drop Majid Khan. Majid was at that stage Prince of Pakistan cricket. Nobody could touch him, and it was his first cousin. So that actually gave everybody, the sign was there, this guy is going to be honest. I remember there was a game in Sialkot in '86, and I came out at number 11 batsman, and Imran said, don't play a silly shot. And what do I do when I walk in? Played a silly shot. So I thought, okay, everybody's changing now, we're going to go out to bowl. Imran probably will, he'll forget about it. But no, I got up in the dressing room, went right into the bathroom, just to hide from Imran. And what did Imran do? He followed me with his spikes on. What did I tell you? Told you not to play a silly shot. You're not going to improve as a batsman. So then I realized he always believed if number 9, 10, 11, if they're fighting it out is blocking, trying to get extra run here and there, it means the team spirit is there. He would fire the hell out of the guys if they don't put in 100%. Back on the cricket pitch in the summer of 1987, Imran Khan led Pakistan to a first ever series win in England with a masterclass in both batting and bowling. A lot of his drive was to set right the wrongs of the colonial age. So he wanted to be England in England. In the end, we won us a World Cup of the '92, and I still remember it. Every Pakistani who watched that World Cup still remembers it like it was yesterday. First few games, first round, we were very down because Pakistan wasn't playing well that time. But we had hope that we can win the World Cup. The minute we started, he said we're going to win this World Cup, because he was about to build a hospital, free for poor and still working perfectly fine. Have poor people get free treatment there for cancer. We had a bad start. We lost our 3 games. West Indies, South Africa, India. So that was the time when Imran and the other senior players took over and just gave us the boost and try to feel confident that we can win the tournament. We were all sitting in the dressing room. Here comes Imran, wearing a shirt with a tiger on. He just got in and said, look, I want to say something. Come, everyone, come closer. That 10-minute speech actually changed everything. I just told them that, listen, just be as if, you're a cornered tiger. Against all the odds, Khan's Pakistan side made it to the World Cup final against an England team who had bowled them out for just 74 runs in a pool match earlier in the tournament. From being almost out of the competition
they'd got to the final, and their last 3 or 4 games they'd absolutely steamrolled over people, so we knew it was a completely different team that we were going to play against in the final. Imran had got them together. World Cup final I still remember the World Cup final, when Imran Khan went in for the toss before the match. He was wearing a green t-shirt with a lion printed on the front of it. When the England captain Graham Gooch came up for the toss, he pointed out that his lion looked down, and Imran Khan replied straight away, "When the match is over, it will be your lions that will be down and out." Imran said, "I reckon you should come for 2 overs, we need a wicket," because partnership was building up. I said, "Sure, I'm warmed up, skipper." The ball to Alan Lamb was the perfect round the wicket, outswinging reverse ball. It was absolutely on the button, unplayable. So I bowled that delivery, he missed it completely, off stump gone, and I think that was it. And it was Imran Khan himself who claimed the final wicket to win Pakistan the World Cup. Perfectly. I mean, he deserved that, I reckon. And he bowled his slow ball. I think Illy was the batsman, Ramiz was the catcher. And it didn't register us for about 2-3 days, to all of us, that we won the World Cup. It's when we landed back into Pakistan, then we realized we did something out of the extraordinary. It was something, the whole country was so happy. I was a die-hard fan. He was huge, Imran Khan. Not just for cricket, the way he carried himself on and off the field, the way he spoke, the way he was as a playboy image as well. So a bit of a naughty image of Imran worked as well. When we were growing up as a cricketer, I think most of the players, they used to follow him because everybody praises him. Whenever he plays, he performed really well, and he wins lots of matches for Pakistan, you know. So you can say, yeah, he was the main man behind our cricket at that time. I used to put the poster in where I used to sleep, you know, in that area. And being an all-rounder, I always grow up watching Imran Khan. He's my hero, he's my idol. We produce some really good cricketers just by watching him, just by following him. And I think he's been a seriously a godfather to all of us. यानी माँ वो होती है जो सारा वक्त माँ, क्योंकि माँ का दर्जा इसलिए इतना ऊंचा है कि कोई और चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। यानी वो सारा वक्त आपको मुझे अपेंडिक्स का था, तो मुझे रात को हमेशा कोई 2-3 बजे मुझे दर्द शुरू होती थी। वो बेचारी सारी रात बैठ के साथ जागती थी। यानी माँ की जो उनका प्यार था। मेरा जब जहाज कभी जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब टर्बुलेंस में ना हिलता था, तो मुझे सीधा होता था कि अगर ये जहाज को कुछ हो गया तो मेरी माँ बेचारी क्या करेगी। तो इस तरह का प्यार था। तो जब वालदा को कैंसर हुई, और वो पता नहीं, वो ऐसी कैंसर थी अगर वो जल्दी पकड़ी जाती तो वो कोलन है, वो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन उनकी क्योंकि यहाँ कोई सही हॉस्पिटल नहीं था, उनकी कैंसर जब पता चला फैल चुकी थी। तो मैं इंग्लैंड लेके गया और वो तब तक स्प्रेड कर गई थी। तो उनके जो आखिरी 2-3 महीने थे वो बड़ी तकलीफ में गुजरे, और वो तकलीफ थी वो देख के मैंने फैसला किया कि अगर मेरे पास वसाइल भी हैं, सब कुछ है, मेरा नाम भी तब था, कि अगर मुझे इतना मुश्किल हुआ है अपनी वालदा को बाहर ले जाना और भी मुश्किल है, और उनकी तकलीफ देखी, और हम सब घर में बहुत बुरी तरह मुतासर बड़ी देर तक रहे उनकी तकलीफ देखे जब वो गुजर भी गई। तो मैंने सोचा कि गरीब आदमी के घर में क्या होता है कि वो बेचारा पहले ही कुछ नहीं है उनके पास, उनके घर में ये हो, और कैंसर है जो एकदम नहीं मरीज जाता, वो फिर कई महीने लगते हैं, आहिस्ता 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 आपके सामने, और तकलीफ भी बड़ी होती है। अब तो शौकत खानम की वजह से और पेन मैनेजमेंट ऐसी है, अब तो मरीज को तकलीफ भी नहीं होती जाते हुए। तब तो मैंने जो उनकी तकलीफ देखी, तब मैंने फैसला किया कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए, जिधर आम आदमी कोई आए और उस पर एक हॉस्पिटल में आए तो उनको, और बहुत महंगा इलाज है कैंसर, तो उसको फिक्र भी ना हो कि
कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरा मुकम्मल इलाज होगा. Everyone thought I couldn't do it. There were articles making fun of me. I had 20 doctors called for, and we had a board of governors. I formed the board of governors, called these doctors to say that this is what I want to do. And 19 said, you can't build a cancer hospital because the running costs are too high and equipment is too expensive. Even the government couldn't build it. One said you can, but then he said you can't give free treatment to poor patients because the cost of treatment is too expensive. So they laughed at me. And this was the story throughout. When the hospital was open, they said, now you can't run it. First they said you couldn't build it, then they said you can't run it. And thanks to the Almighty, it is one of the only private cancer hospital anywhere in the world where 70% Persian plus get free treatment. By winning this World Cup, personally, it means that one of my greatest obsessions in life, which is to build a cancer hospital, I'm sure that this World Cup will go a long way towards completion of this obsession. जितनी करप्शन पाकिस्तान में होती रही, हमारी कौम इसको अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है. आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ये लिखा गया कि बेनजीर और आसिफ जरदारी की 2.5 मिलियन पाउंड की एक कोई घर खरीदा गया इंग्लैंड में. सुने अब हमें ये नहीं पता कि ये वाकई खरीदा गया या नहीं, लेकिन हमें ये चीज समझ आई कि तकरीबन 3.5 टन सामान इंग्लैंड भेजा गया पीआईए पे और मुफ्त. You know, in life, to succeed, you have to have total passion and total commitment. Everything else takes a second place. Including family? And sadly, you know, if there's one, what's the word I would use? The greatest pain I've had is not seeing my boys grow up. You know, my divorce, where my boys left home and went with their mother. So that was for me, if someone asked me in this 19, almost 20 years now, what did you sacrifice the most? So I would say being a father. I didn't spend enough time with my boys. But you know, if you look around, all those throughout history, people who struggled, their family lives did suffer. I've lost the fear of dying. So when the time comes, you know, you will. And there's so many ways of going. So actually I don't worry, but I would have worried if my family was here.
नहीं खर्च होगा। इंशाअल्लाह जब तरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये जो गवर्नर हाउस की दीवारें हैं ये तोड़ दी जाएंगी। The moment Pakistani cricketer turned politician Imran Khan fell off a makeshift lift in Lahore. He was being raised onto a stage at a rally just days before parliamentary elections. The PTI party leader suffered 2 minor skull fractures and a back injury. But Khan was soon talking politics again, addressing voters from his hospital bed. I fought for Pakistan all of my life, he says. I've done whatever I could do. Now I want you to take responsibility. If you want to change your fate, then you have to take responsibility. Dozens of supporters have been praying for Khan's recovery. His party is not expected to win Saturday's poll, but it could be a major partner in a coalition government. काम किया वो आइडियलिस्ट होता है। आज तक कोई कायदे आज़म से बड़ा आइडियलिस्ट कौन था? इलामा इकबाल से बड़ा आइडियलिस्ट कौन था? हमारे रोल मॉडल्स कौन है? मैं हमेशा मिसाल देता हूं लोगों को कि रियलिस्ट ने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर एडमंड हिलरी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था वो रियलिस्ट होता, वो ना करता। बिल्कुल ना। क्योंकि रियलिज्म तो आपको ये कहती जो पहली चीज नहीं हुई वो नहीं हो सकती। ठीक। आइडियलिज्म आपको कहती है, और सबसे बड़े आइडियलिस्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ठीक। रियलिज्म और आइडियलिज्म में फर्क ये होता है कि ईमान जो है ये आपको आइडियलिस्ट बना देता है। आपका जो ईमान है वो चीज कहता है कि अल्लाह वो काम कर सकता है जो आपको नजर नहीं आ रहा होता, और वो हमारे लिए वो अपने नबी की सबसे बड़ी मिसाल है। तो मैं शुरू से आइडियलिस्ट, मुझे सारे कहते थे मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मेरे 2 कजन मेरे से बड़े थे, दोनों टेस्ट कैप्टन बने। बिल्कुल। सारे मेरे बाकी कजन कहते थे कि मेरे से बहुत अच्छे थे, मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं। फिर मैं जब तेज बॉलर बनना चाहता था, मुझे सारे कहते थे तेज बॉलर नहीं बन सकते, तुम्हारा बॉलिंग एक्शन नहीं। आप ऑफ स्पिनर के तौर पे आए थे? मैं मीडियम पेस था, लेकिन मेरा एक बॉलिंग एक्शन था जो मुझे तेज बॉलर बनने से रोक रहा था। मैं दुनिया की तारीख का वाहिद तेज बॉलर हूँ जिसने 6 साल लगाए अपना मुकम्मल तौर पे एक्शन बदलने और तेज बॉलर बना। ये किसी ने नहीं किया। फिर मुझे कहा तेज बॉलर कैप्टन नहीं बन सकता। फिर मुझे जब मैं शौकत आलम शुरू किया तो लाहौर में मीटिंग में हमें समझ ना आए कैसे बनाए। 20 लाहौर के डॉक्टर्स हमने दावत दी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठे, 19 ने कहा पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता। फिर जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो हमने अमेरिका से एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए, उसने कहा तुम गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। ये सारी जिंदगी में जो रियलिस्ट हैं वो रियलिस्ट एक एडवाइस करते हैं, और जो ख्वाब देखने वाले आइडियलिस्ट हैं वो अपनी ख्वाब के पीछे जाते हैं। और मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती। अब आप हारते हैं जब आप हार तस्लीम कर लेते हैं। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। गैलरी में साथी नाराबाजी ना करे प्लीज। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाने का जिस तब्दीली की ये कौम 70 साल इंतजार कर रही थी। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारी जिंदगी एक चीज सीखी है, मुकाबला करना। मैं इंशाल्लाह आप सबको, आपने मेरी टीम बनना है और मैं आपको अब ये जिधर हम खड़े हैं मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा हम कैसे निकलेंगे इससे। तो शुरू करूंगा अपने आप से। मैं पहले ये जो हमारी
524 मुलाजिम हैं। मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने आपको बताया मैं नहीं रहा। मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजिम रखूँगा और ये 2 गाड़ियाँ रखूँगा। वो 2 गाड़ियाँ इसलिए रखूँगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। असल में मैं अपने घर में रहना चाहता था, मैं ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसीज ने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो मैं आराम से बनी गाला में रह सकता था ताकि कोई भी खर्चा ना हो। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाअल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब के हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। उसके अलावा मेरी जो सोच है कि हम सारे गवर्नर हाउसेस, हम जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, दो जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम इनको सब में सादगी लेके आ पाएंगे। खर्चे अपने कम करेंगे। हम आपको आगाह रखेंगे कि हम कितने अपने खर्चे कम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पहले क्या खर्चे थे, अब क्या है। ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। इन सारे गवर्नर हाउसेस के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी है दानिश्वरों की, इसमें हर किस्म के एक्सपर्ट्स बैठे हैं। ये मीट करेगी अभी कमेटी इंशाल्लाह। जब हमारी कैबिनेट मीटिंग कल से शुरू होगी, ये कमेटी मीटिंग बुलाऊंगा। ये फैसला करेंगे कि इन बड़े बड़े हमने इनके लिए क्या करना है जिससे अवाम को फ़ायदा हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और यूनिवर्सिटी के लिए होनी भी अच्छी सी जगह है। तो एक तो मेरा ये सोच है, बाकियों का हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे कि हम इनके लिए क्या करेंगे। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे।